Now, finding values about 18 degrees and 36 degrees. So sine 18 degree will be root 5 minus 1 by 4. Sine 36 degree would be root 10 minus 2 root 5 by 4. Cos 18 degree would be root 10 plus 2 root 5 by 4. Cos 36 degree is root 5 plus 1 by 4. So these are the values of sine and cos of 36 and 16 degree respectively. Now, let's take a question. Okay. A denotes value of, okay, A denotes value of 4 times cos 2 pi by 15 plus cos 4 pi by 15 minus cos 7 pi by 15 minus cos of pi by 15. ओके, सो जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा वो ए का वैल्यू रहेगा. ओके, दिस ए डिनोट्स, बी डिनोट्स, ओके, बी डिनोट्स value of 8 cot alpha plus beta plus gamma, okay, where tan alpha, tan beta and tan gamma are the roots, where tan alpha, tan beta, tan gamma are the roots of, are real roots ले लो, are real roots of x cube minus 8 bracket a minus b x square plus 2a minus 3b times x minus 4 times b plus 1 is equal to 0. Okay, then mod ab is equal to question mark. Okay, let's try to understand. Certain sections are given. सबसे पहले दिया है a denotes value of 4 times. This is the value that is given. Now I have to be very careful. We'll just take step by step. Okay. We'll take it step by step. Now if you see the question, they have said a denotes something of that sort. Now let's consider how much is pi by 15. ठीक है, pi by 15. If I consider pi by 15, 180 times 5 becomes 12. So if I write this as a is nothing but 4 times bracket में cos 12 times 2 is 24, 24 plus cos 48 minus cos 12 times 7 is 84 minus cos 12. Anybody has any doubts here? If you see carefully, they have said find the value of this. Now I don't know what the pattern should be. Now I can take 48 minus 12, I can take 24 minus 12. I have certain values given to me. 18 and 36. If I add them, 24 and 12 becomes 36. 36 का half becomes 18. So सबसे पहले ना let's try to take the दो छोटा नंबर्स को हम लोग सॉल्व करते हैं. This will become, I'll just write it together. This will become cos c minus cos d. Cos c minus cos d. Okay, if I choose cos c minus cos d, 2 sine c plus d by 2, which becomes 18. Sine d minus c by 2. So it will become minus 12 plus cos 48 minus cos 84. Have you guys understood this? Now, do I have the value? I have certain value. If I add them, say for example, अब 48
and 84. If I use the same formula here, एक काम करते हैं इसको यहाँ पे ही कर लेते हैं. I'll do the pairing of these two terms. Cos C minus cos D. Again cos C minus cos D. So this will become 2 sine 48 plus 84. Okay, just so that it does not get confused. 48 plus 84 becomes 132. 132. Cos C minus cos D is 2 cos C plus D by 2, which becomes 61. Sine D minus C by 2. Now, if I do 84 minus 48, okay, if I separate 84 minus 48, कितना आएगा? 36. बराबर? Yes, no. 36 divided by 2 हो जाएगा. How much is 36 divided by 2? 18. Minus 18. I see something common, but before that I'll have to simplify. Minus 2 sine 18 sine 12 minus 2 sine 61 sine 18. 66. 61 क्यों लिखा? 66. Okay. Now I can take minus 2 sine 18 outside. So I'll write 8 minus 8 sine 18. अंदर बचेगा sine 12 plus sine 66. Anybody has any doubts here? Has everybody understood this? Yes, no? अरे सब लोगों को समझा क्या? ठीक है. अब देखो ध्यान से देखो. यहाँ पे ना this is the common mistake that people do. We do cos C minus cos D is 2 cos C minus cos D is 2 sin C plus sin D minus C by 2. तो यहाँ पे ना प्लस होगा हमेशा, याद रखो. So if I don't take minus outside, you can keep it here. This will become minus sine 12 sine 66. So I can write it like this. This will become sine 66 minus sine 12. Sine C minus sine D. Sine C minus sine D will become 2 cos C plus D by 2. That is C plus D by 2. 66 plus 78. 66 plus 12 becomes 78. What is 78 divided by 2? 30? 39. And sine 66 minus 12? 54. 54 divided by 2? कितना? 27. ओके, बोलो क्या करेंगे? बराबर है ना? यहाँ पे कुछ गलत हो गया? Cos C minus cos D is 2 sin C plus D by 2 sin D minus C by 2, which will become sin 18. ये sin 12 बराबर है ना? अरे sin 6 हो जाएगा ना? 12 क्यों लिया? This will become sin minus 6. This will become sin 6. And this will change. 66. ये change होएगा. ये change हो जाएगा. So this will become minus sin 6, 66. 66 minus 6. Cos C plus D by 2. 72. What is 72 divided by 2? 36. 66 minus 6. How much? 60 divided by 2. 30. क्या हो जाएगा ये फिर? Sin 30 is half. So this will become 8 sin 18 cos 36. Sin 18. Root 5 minus 1 by 4. Cos 36. Root 5 plus 1 by 4. ठीक है? Root 5 minus 1 by 4. Root 5 plus 1 by 4. Which will become 8. What is a minus b times a plus b? A square minus b square, which is 5 minus 1, which is 4. Times 4 times 4. Which will become, this gets cancelled, this gets cancelled. 4 times 1, 4 times 2. So I have got the value of a as 2. So see this. They have asked what is mod AB. No problem. I have got the value of a as 2.
Now the thing is that they have said that I have a cubic equation. Okay, I have a cubic equation. Now, brushing up a little bit of cubic equation, I'll just revise कि if you have a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, we know that sum of the roots is minus b upon a and product of the roots is c upon a. See, quadratic matlab there are going to be two roots. I have taken alpha and beta are the roots. Okay, I'm just revising a little bit of quadratic. Alpha plus beta is minus b upon a, alpha into beta is c upon a, because there are two roots. I've got two conditions. If someone gives like this, ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. I have three roots and the three roots are alpha, beta and gamma. सबसे पहले sum of the roots, it does not change. It is minus b upon a. This is sum of the roots. Okay. Next is sum of the product of two roots. मतलब alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. अभी देखो b upon a हो गया माइनस के साथ. नेक्स्ट हो जाएगा c upon a which is positive. And लास्ट में आएगा product which is minus d upon a. तो as of now remember this. So if you pay attention carefully, यहाँ पे दो ही था तो दो ही कॉम्बिनेशन है, या तो इसको ऐड करो या तो मल्टीप्लाई करो. मेरे पास तीन कॉम्बिनेशन था. तीन कॉम्बिनेशन मतलब या तो तीनों को ऐड करो या तो तीनों को मल्टीप्लाई करो या तो दो दो का ग्रुप बनाओ. अल्फा बीटा, बीटा गैमा, अल्फा गैमा. So this is what we have written. Now why did I write this? Because if you pay attention, they have said in this question, if you pay attention to the question, they have said tan alpha, tan beta and tan gamma are the real roots of the equation. Real roots of the equation दिया. मतलब what I can do is I'll just write the question again here so that we can compare directly, guys. Okay, देखो ध्यान से देखो. My equation is this: x cube minus 8 a minus b x square plus 2a minus 3b times x minus 4b plus 1 is equal to 0. Let's check the equation. Minus 4b plus 1 equal to 0. Perfect. Now they have said tan alpha, tan beta and tan gamma are the roots. अब मैं सब कॉम्बिनेशन लिखने वाला हूँ, तो I will write sum of the roots. Sum of the roots is minus b by a. I'll write the formula minus b by a. And according to the formula, this will become minus of minus 8 a minus b upon 1, which will become 8 a minus b. Have you guys understood this? Okay, this is sum of the roots. Okay, 8 a minus b. Next है sum. अच्छा also one more thing. ये लिखने से अच्छा I can write like this: summation of tan alpha is minus b upon a. इसका मतलब होता है alpha plus beta plus gamma. Okay, next देखो क्या आएगा. See, I'm going to write it. I'm going to write the shortcut also. Next is tan alpha into tan beta plus tan beta into tan gamma plus tan gamma into tan alpha is equal to c by a. Now if I check c, it will become 2a minus 3b. इसका शॉर्टकट कैसे लिखते हैं? समेशन, देखो समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म ले लिया तो दे अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सेकेंड कंडीशन भी हो गया. एंड द लास्ट इज प्रोडक्ट. सो tan alpha into tan beta into tan gamma is equal to minus d upon a, which is minus of, बेसिकली हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 4 into b plus 1. So guys, I have got sum of the roots, I have got product of the roots, and last में they have said that I have to find the value of b. Okay, then the value of 8 cot alpha plus beta plus gamma. अब प्रॉब्लम ये है, they have asked 8 cot alpha plus beta plus gamma. Till now we have done tan alpha plus beta, which is tan a plus b, which is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. यहाँ पे पूछा है
3 terms. We have never written a formula for 3 terms. So क्या करेंगे, सबसे पहले tan लिख, let's find the value according to us. Let's find what is the actual formula of tan of alpha plus beta plus gamma. See, there's a reason I have written the formulas. Okay, देखो यहाँ से I'm just going to underline this. ये याद रखो पहला. All the shortcuts that I wrote guys. ठीक है, ये तो प्रोडक्ट ही है. सबसे पहला, okay, we know how summation looks, we know how product looks. So the formula is this: summation tan alpha is this. Okay, summation tan alpha minus, अभी देखो, the formula that we have written, we know the formula for tan a plus b. tan a plus b का formula is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. अगर कभी नहीं याद रहेगा तो take alpha plus beta is one term, take gamma is another term. You might have to simplify in the exam. बहुत lengthy हो जाएगा, but you'll get the answer. So this is the first time we are going to do tan alpha plus beta plus gamma. This is given in the booklet. This formula is given in the booklet. सबसे पहले तो मैं क्या लिख रहा हूँ, summation tan alpha मतलब this part, that is tan alpha plus tan beta plus tan gamma minus product of tan alpha. Product, ठीक है, minus product of tan alpha. See, this is product. This is called as product tan alpha is equal to minus d upon here. This is product tan alpha. Okay, so I'll repeat again: summation tan alpha minus product tan alpha upon summation tan alpha minus product tan alpha upon, देखो tan a minus tan b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, ओके, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, ये सेम रहेगा. tan का हर फॉर्मूला में, tan का हर फॉर्मूला, यहाँ पे माइनस है, सॉरी, tan के हर फॉर्मूला में डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म शुड बी 1. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, नेवर फॉरगेट दिस. For all formulas of tan that we'll be doing, denominator का first term should always be 1. If it is not 1, make it 1. If it is not 1, make it 1. Minus summation of tan alpha tan beta. See, summation of tan alpha tan beta. Now all I will do is I'll substitute. Sum of tan alpha is minus b upon a, which is 8 bracket a minus b, minus d upon a, which is 4 bracket b plus 1, the whole upon 1 minus summation tan alpha tan beta is nothing but 2b 2a minus 3b. Okay, how many of you have not understood this? Has everybody understood this? If I open the bracket, what will the numerator become? 8a. Now minus 8b minus 4b will become minus 12b minus 4 upon 1 minus 2a plus 3b. 1 minus 2a minus 3 plus 3b. Is there anything common in the numerator? I'll take minus 4 common. So what will this become? Minus 2a plus 3b plus 1 upon 1 minus 2a plus 3b. So this has become minus 4. Okay, so b ka value has become minus 4. So this is the value of b that has become minus 4. And since b ka value has become minus 4, they have asked us last one, therefore a ka value is 2, b ka value is minus 4, therefore mod ab will become mod of 2 times minus 4, which is mod of minus 8, which is equal to it. A very, very, very lengthy sum. Why lengthy? Because these are two different sums. We have done an entire part of the first sum. This is the second sum where I have to find the integer value or mod of a, b. Has everybody understood this? Anybody has any doubts? So these are, see, remember this, these are two individual sums. तो देख के मालूम पड़ना चाहिए कि ये लेंदी होने वाला है. And we just got introduced to quadratic equation. Quadratic equation is one of the most important chapters. एक question compulsory आना ही है.
Okay. So since we have already done the formula, let's write certain set of formula for tan. Alpha plus beta, alpha into beta. Okay. We'll put a topic of conditional identity. Conditional identity. ठीक है. सबसे पहले we have written it, we are going to write it again. अब थोड़ा लंबे से लिखेंगे. Tan A plus B plus C is actually the formula is this. Tan A plus tan B plus tan C minus product of tan A, tan B, tan C, the whole upon 1 minus, I'll put this in bracket. So अगर bracket नहीं डालना तो भी चलेगा, but if you write it to tan A, tan B plus tan B, tan C plus tan C, tan A. And this is the formula. So what we have done is we have just put the formula for tan A plus B plus C, sum product 1 minus sum of the product of two roots. This is called as sum of the product of two roots. Okay. Now, let's write this. If I have to write sine of A plus B plus C. Now you can derive it. Okay, you can derive it. नहीं derive करना है, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं. You can write sine A plus B plus C. Take A plus B as one term, take C as another term. Keep substituting the formulas, you will get the answer. अब इसका shortcut देखो कैसे रहेंगे. Summation of sine A cos B cos C minus product of sine A. मैंने कहा था प्रोडक्ट ऑफ साइन ए मतलब इसका देखो, इसका मतलब होता है साइन ए कॉस बी कॉस सी, इसका सम हो जाएगा. तो सम ऑफ दिस माइनस प्रोडक्ट ऑफ साइन ए. दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी प्लस सी एंड द फॉर्मूला फॉर कॉस ए प्लस बी प्लस सी. अब देखो यार, कॉस में ना अपने को पता है कि कॉस हमेशा उल्टा ही रहेगा. कॉस में हमेशा दिस विल बिकम कॉस ए. देखो हाँ, प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए माइनस अगेन एग्जैक्ट ऑपोजिट इसका समेशन ऑफ cos A sin B sin C. cos A sin B sin C एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है इसका. सो ये जो सम है ये बाद में आएगा, ये जो प्रोडक्ट है ये इसके पहले आ जाएगा. नाउ जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. एग्जाम में डिराइव करना है, घर पे जाकर डिराइव करना है. यू कैन ट्राई दिस वंस सो दैट यू गेट एन आइडिया एज टू how you can proceed with these questions. Okay. Now, remark. First part. If a plus b plus c is equal to n pi मतलब कोई भी पाई वैल्यू ले लो. एग्जाम्पल समझो ये ट्राइंगल है. A plus B plus C is 180 degree. Sum of the triangle is 180 degree. किसी ने बोला कि नहीं, I want to write A plus B plus C as 360. No problem. We have not written. I'm just telling you in case if this is a triangle, A plus B plus C होता है pi. क्यों लिखा है? If I take tan on both sides, tan A plus B plus C is equal to tan n pi. We know that tan on the pi values, that is on the x-axis, will always give you the answer as 0. Tan on the x-axis is always going to give you the answer as 0. And since this is going to give the answer as 0, we have just written tan का formula. We have just written tan का formula. देखो, तो if this is 0, the entire term comes on the left hand side and it will become 0. So again the same thing. So I will write therefore tan और कोई भी पाई का वैल्यू हमेशा 0 होगा. So this is nothing but summation of tan A minus pi tan A is equal to 0. अब 0 कैसे हो गया? अगर ये 0 हो गया, I have taken all the denominator on the left hand side. So 0 into denominator becomes 0. Sum minus product equal to 0.
Therefore, if it is 180 degree, I can write sum of tan A is equal to product of tan A. In other words, you can write tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A, tan B, tan C. A very 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 important remark कि अगर a plus b plus c n pi है, tan of a plus b plus c is equal to tan n pi. Therefore, tan of a plus b plus c is equal to 0. Therefore, summation of tan a minus product of tan a is equal to 0. Therefore, I've got tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a tan b tan c. Has everybody understood this? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है. अभी अगर किसी ने बोला कि ओके इसको ना ओके ऐसा कर लेते हैं, इफ आई डिवाइड थ्रू आउट बाई tan a tan b tan c, मैंने क्या कर दिया, आई डिवाइड थ्रू आउट बाई tan a tan b tan c. tan a upon tan b tan c will become cot b cot c plus cot c cot a plus cot a cot b is equal to 0. मैंने कुछ नहीं किया गाइस, मैंने सिर्फ थ्रू आउट डिवाइड किया बाई tan a tan b tan c. This upon tan a tan b tan c will give it this plus this is equal to 0. In other words, you can write it as summation of cot b cot c is equal to 0. They can ask you in any manner, in any language, in any pattern. So you have to be a little careful when you proceed. ये remark है, ये remark में I have got two results. इस रिमार्क में आई हैव गॉट 2 रिजल्ट्स. माई एक्सपेक्टेशन इज यू हैव टू गो होम एंड प्रैक्टिस. विदाउट प्रैक्टिस इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. अब देखो यहाँ पे एन पाई ले लिया, सेकेंड कंडीशन लेते हैं पाई की जगह लेट्स टेक पाई बाई 2. इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एन पाई बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एन पाई बाई 2. बोलेगा एन पाई बाई 2 की जगह एन 2 डाल दिया तो ये भी वैलिड डाउट है. सो लेट्स टेक ऑड पाई बाई 2. ठीक है, ऑड पाई बाई 2 बिकॉज इवन पाई बाई 2 पाई बन जाएगा. ओके, tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई 2. वी नो दैट tan 90 होता है इन्फिनिटी. tan 90 becomes infinity. Infinity मतलब anything upon 0 is infinity. Anything if divided by 0 it becomes infinity. मतलब if I take like this, therefore tan of a plus b plus c this will become infinity. अब infinity मतलब सोचो ना, anything upon 0. समझो दिमाग में हम लोग लेते हैं 1 upon 0. अब 1 upon 0 मतलब look at this formula. Imagine if I'm equating anything upon 0, ये 0 यहाँ पे जाएगा and entire numerator becomes 0. Entire numerator will become 0. So if I can write this, I'll just show it to you. इसका फॉर्मूला देखो क्या रहेगा, tan a plus tan b plus tan c upon minus tan a tan b tan c is equal to, ये देखो this part evident and 1 minus sum of the product of two roots. याद रखवाएंगे 1 minus ब्रैकेट में लिख दिया tan a tan b plus tan b tan c plus tan c tan a is equal to, अगर मैंने इसको 1 upon 0 ले लिया, समझो 1 upon 0 ले लिया, एनीथिंग अपॉन 0 ले लो इसको, ठीक है, एनीथिंग अपॉन 0 ले लिया मैंने, या तो आई कैन इन्वर्ट इट बट एनीथिंग अपॉन 0 ले लेते हैं. इफ आई हैव टू सॉल्व दिस एंड देखो मैंने कॉट में भी कन्वर्ट कर दिया था, बट ठीक है इसको ऐसे सॉल्व करते हैं. तो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिस एंटायर पार्ट बिकम 0, दिस विल बिकम 0 इज इक्वल टू 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a. Therefore, I will get 1 is equal to summation tan a tan b. This is when it is a multiple of pi by 2. ये देखो एग्जैक्ट ऑपोजिट है, यहाँ पे सम आ गया
यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, और ये कंडीशन है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स आ गया. सो एवरी कंडीशन इज सेटिस्फाइड. पाई पे दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, एंड पाई बाई टू पे एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स. हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? यस, नो? चलो, now let's start with a question. In triangle ABC, okay, in triangle ABC, summation of cot, because we have done all the others, summation of cot A by 2 is equal to product of cot A by 2. ठीक है, अब देखो ध्यान से, बाई 2 बोला है, वी नो दैट ट्राइंगल दिया है, they have given us in triangle ABC. Since they have given in triangle ABC, we know that triangle का sum of the angles is always going to be 180 degree. ठीक है, so what should be the first step? I'll write in triangle ABC, in triangle ABC, A plus B plus C is equal to pi. So I'll write A is equal to pi minus B plus C. Any doubts? A के नीचे क्या है? 2 है. तो what I'll do is I'll divide by 2. So A by 2 is equal to pi by 2 minus B plus C by 2. इसके आगे क्या है? cot है. So cot A by 2 is equal to, now cot A by 2 is equal to, this is given as cot A by 2. Now since I write as cot A by 2 अगर ले लिया मैंने, okay, so cot of pi by 2 minus B plus C by 2 हो जाएगा. What happens when there is B plus C by 2 or anything? If there is anything given to you, देखो मेरे को ये प्रूफ करना है, summation of cot A by 2 is equal to pi cot A by 2. I have written till here. What do you think according to you should be the next step if I have to solve this? B by 2 plus C by 2. B by 2 plus C by 2. Okay, समझो मैंने ऐसे कर दिया. This will become cot of pi by 2 minus B plus C by 2. Can you tell me इसका आंसर क्या हो जाएगा? Can you tell me इसका आंसर क्या हो जाएगा? Tan of B plus C by 2. But the problem is, ये wrong नहीं है. This is not wrong. Don't think that this is wrong. This is not wrong. अब issue क्या होगा पता है? You will have to put tan का formula, and since you require the answer in cot, you will have to convert all tan values into cot. Are you understanding? What is the formula for tan B plus C? Tan B plus tan C by 2 छोड़ दो, but what is the formula for tan B plus C? Tan B plus tan C upon 1 minus tan B tan C. सोचो tan को cot में कन्वर्ट करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आएगा, but lengthy method. So this is not a wrong method. If I have to show this to you, this is not a wrong method. Okay, I'll show this to you. देखो ये हो जाएगा cot A by 2 will become tan B by 2 plus tan C by 2 upon 1 minus tan B by 2 tan C by 2. अब कुछ नहीं करना है, you will have to just take it on the left hand side, multiply करो, जो भी tan है उसको cot में कन्वर्ट करो, and finish your answer in cot. एक भी tan नहीं रहना चाहिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ tan B by 2 will become 1 upon cot C by 2. या तो इसको इंडिविजुअल, इसको देखो इंडिविजुअली सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज 1 माइनस, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, यू हैव टू सॉल्व इट, आंसर आएगा, बट बहुत लेंदी. अब इसका शॉर्टर वे कुछ कर सकते हैं, दिस इज मेथड 1. शॉर्टर वे कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं. आई हैव इसका फॉर्मूला, आई हैव द फॉर्मूला, इवन आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव ऑल, tan A plus B plus C भी है, पाई भी है, पाई बाई 2 भी है, देखो यहाँ पे पाई बाई 2 है, एग्जैक्टली पाई बाई 2 है, एंड यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखोगे तो पाई बाई 2 है.
So one method I have shown you, very lengthy, you can continue this, कंटिन्यू कर सकते हो. सेकेंड मेथड में हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि आई विल राइट लाइक दिस. ओके, मेथड 2 से करते हैं. अच्छा, बाय द वे, वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू वो मेथड से करो. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हैव टू फॉलो दिस मेथड और दैट मेथड. मैंने कर दिया बाई 2 एंड दिस विल बिकम पाई बाई 2. सो दिस विल बिकम a by 2 plus b by 2 plus c by 2 is equal to pi by 2. अब मुझे ये पता है tan pi by 2 is this. अब cot, किसी ने बोला cot का फॉर्मूला यूज कर लो. cot की जगह आई कैन डायरेक्टली राइट, ये अब भी हमने प्रूव किया था, अभी वी जस्ट प्रूव दिस, वी जस्ट प्रूव समथिंग लाइक दिस, समथिंग वी प्रूव दैट summation of tan a tan b is equal to 1. we just proved that summation of tan a tan b is equal to 1. summation of tan a tan b is equal to 1. ये पूरा सॉल्व किया हमने, देखो pi by 2, this entire thing we solved. so I want you guys to try इसके बाद कि मेरा आंसर ये आएगा कि नहीं आएगा. has everybody understood this? can you try this sum? अरे yes or no? Yes. तुमको कुछ नहीं करना है, just take tan on both sides and if you take tan on both sides you will get the answer. you will get the answer. तुमको सिर्फ क्या करना है, इस स्टेप के बाद you just need the answer in cot. तो यहाँ तो परफेक्ट है, अब cot में कैसे आंसर लाएंगे, that is what I have to see. so here when you simplify I need you to prove this. don't worry, before the end of the lecture we'll be finishing it, but I want to see how will you go about it. this is same as this same, exactly same something upon 0 रहेगा. यहाँ पे ऐसे लिख लो something upon 0. usually we take it as 1 but something upon 0. तो अगर समथिंग रहेगा तो 0 अपॉन समथिंग इज बेसिकली 0. एंड इफ आई सिंप्लीफाई आई हैव गेट दिस आंसर. अब किसी को कुछ और करना है कि इसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया या डिवाइड कर दिया किसी चीज़ से, वॉट एवर इज कम्फर्टेबल फॉर यू, यू विल लीव एट दैट मेथड. ठीक है, आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई दिस बाय दिस मेथड. जस्ट टेक tan on both sides. आई जस्ट राइट one more step. so this will become tan a by 2 plus b by 2 plus c by 2 is equal to 1 upon 0 ले लो, 1 upon 0 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई and you will get the answer. and if you don't, I will still solve the sum for you guys. so it's a very important step. okay, next. ठीक है, okay, cos 2a plus cos 2b plus cos 2c. ठीक है, अब in triangle ABC, prove that cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is equal to 1 minus 4 minus 1 minus 4 cos a cos b cos c. A very important sum. okay, you just need to remember the result, but ये कैसे आया, we are going to solve it now. I need 4 cos A cos B cos C. Can anyone tell me what should be the first step? I have to take the LHS. You don't have to solve the RHS. You have to get the RHS. Can anyone tell me how should we proceed with this? Which formula will be using here? Cos 2 is 1 minus 1 plus cos 2 is 2. Now, there's a very obvious formula. Can anyone tell me what is the formula? Cos C plus cos D. What is the formula for cos C plus cos D? LHS लेते हैं. What is the formula for cos C plus cos D? 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. And cos 2C का formula is right 2 cos square C minus 1. मेरा minus 1 आ गया. ओके, अब देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इज पाई, ए प्लस बी इज पाई माइनस सी, therefore cos a plus b is equal to cos of pi minus c which is equal to minus cos c. जैसे ही माइनस cos c आ गया, हो जाएगा माइनस cos c इंटू cos of a minus b प्लस 2 cos square c minus 1. okay,
प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी -1। अगर ध्यान से देखेंगे -1 को बाहर ले लेंगे हम लोग। आई जस्ट राइट इट अगेन, -2 कॉस सी कॉस ए माइनस बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी -1 माइनस, आई टेक 2 कॉस सी कॉमन, अंदर बचेगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, a minus b plus cos c plus cos c. Can anyone tell me what is c का value? If a plus b plus c is equal to pi, c will become pi minus a plus b. Therefore, cos c will become minus cos a plus b. Okay. So all I have to do is, if I solve this, this will become minus cos a plus b. Okay. So this will become 1 minus 2 cos c cos a minus b minus cos a plus b. ओके, cos c plus cos d, देखो -2 माइनस cos a आ गया। नाउ 1 minus 2 cos c बराबर ना, 1 minus 2 cos c, it will become cos a minus b, हाँ, minus cos a plus b. What can we do here? Which formula can we use here? 2 cos 2 cos 2 sin is sin. 2 sin a sin b, cos a minus b, cos c minus cos d. What is the formula for cos c minus cos d? 2 sin, yes, बोलो 2 sin, बोलो ना, c plus d by 2, तो क्या आएगा? हाँ, c plus d by 2 क्या आएगा? b कि a? ओके, इंटू साइन b भी ना, श्योर, पक्का? अरे यस नो, पक्का श्योर, ठीक है, बट मैंने तो ये लिखा है। सो यू विल टेल मी, obviously before the lecture gets over, while you're writing, is this correct? Does this need to change or does this need to change? फॉर्मूला यूज किया मैंने तुम्हारे सामने, does this need to change or does this need to change? तो you will tell me how, and अगर मिस्टेक है तो will tell me कि exactly कहाँ पे मिस्टेक है। Has everybody understood this sum at least? What have I done is, सबसे पहले यहाँ पे दिया इन ट्राइंगल ABC, जब जब दिया है इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले चीज़ हमारे दिमाग में ये आना चाहिए that the sum of the angles of a triangle is always going to be 180 degree. मैंने cos c plus cos d लिया, किसी ने बोला नहीं मेरे को a plus c लेना है, no problem, you can take a plus c. I did this, I solved this sum, this will become minus, minus common लिया, नहीं भी minus common लिया, minus बाहर आ गया, this became minus cos c cos a plus b plus cos square c. If I take minus cos c common, ये हो गया प्लस, यहाँ पे देख लो कुछ चेंज रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ चेंज रहेगा क्या? ये देखो कुछ चेंज है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या होगा फिर? माइनस। अब बताओ अगर माइनस है तो व्हाट इज माइनस कॉस सी का वैल्यू क्या रहेगा? ये हो जाएगा प्लस। और गाइस अगर ये प्लस है, अब बताओ क्या फॉर्मूला चेंज होएगा? बोलो क्या होएगा? 2 cos a cos b। अब मिल गया। वन स्मॉल मिस्टेक, याद रखो, वन स्मॉल मिस्टेक एंड दिस इज हाउ वी लूज आवर मार्क्स। हमने कोई फॉर्मूला रॉन्ग नहीं लिखा है, हमने बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन रॉन्ग किया एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट डज नॉट हैपन, इट हैपन्स। बहुत कॉमन मिस्टेक होता है, इसीलिए द रिमार्क
Even if you don't know the entire sum, it's very important for you to know the remark. Cos 2a plus cos 2b plus cos 2c starts with -1, followed by -4, followed by 3 terms of cos, 3 individual angles. मतलब cos a भी रहेगा, cos b भी रहेगा, cos c भी रहेगा. Has everybody understood this? So याद रखो, small mistake, small, and मेरा प्लस का माइनस बन गया, मेरा cos का साइन, दोनों cos का साइन बन गया. Now नेक्स्ट हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो विल टेक दिस एज अ सेकंड रिमार्क. हाँ, अगर घर पे सॉल्व करना है तो यू कैन सॉल्व इट. तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c is equal to 4 times sin a times sin b times sin c. This is the remark. ठीक है, you can start writing from till here first. Now the next topic is summation of trigo series. ठीक है, अगर मेरा एंगल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वी यूज द समेशन. आई गिव एन एग्जांपल. sin alpha plus beta sin alpha plus 2 beta. If you check, the angles are in AP. Alpha plus beta, 2 beta, 3 beta, and minus 1 beta. The sequence is in AP. Remember this, the sequence is in AP. The sequence is in AP. The answer becomes sin n beta by 2 upon sin beta by 2 multiplied by sin n beta by 2 multiplied by sin beta by 2 into cos of. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था, ठीक है, ये लास्ट एंगल है मेरा बेसिकली. सो अल्फा प्लस n minus 1 beta the whole upon 2. A very 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 important formula. Okay. Okay, a very important formula. Say for example, if I take a question, ये साइन का था, एक और लिख लेते हैं. cos alpha सेम है, सेम सी दिस cos alpha plus beta, ये n beta by 2 हो जाएगा. तो साइन में रहेगा तो कन्वर्ट इनटू cos. If even if they have given like this, cos alpha plus beta plus dot plus cos of alpha minus n minus 1 beta. Okay, same thing, just compare ऊपर वाले से. Alpha plus 2 beta up till last term था, everything is the same. Just convert sin into cos and you'll get the answer. So sin n beta by 2 upon sin beta by 2 into cos of alpha plus n minus 1 beta the whole upon 2. So what we'll do is we'll continue. ये साइन है गाइस, ठीक है. So we'll continue the sums on this. Next lecture the chapter gets over. We'll continue lot of sums on this. This is probably the second last topic. There's one more last topic, will be range of all the trigonometric functions. So we'll be done in the next class. Okay, chalo, we'll stop for the day.